तो आवाजें बिल्कुल ही बदल जाती हैं। ये पता ही नहीं चलता कि ये वही इंसान था जो थोड़ी देर पहले सोशली इतना पोलाइटली बातें कर रहा था। Hi friends, how are you doing today? You're watching YouTube channel Ielts Coaching and I'm your Ielts expert, Ramandeep Singh. Today's video is going to be about one of the latest cue cards, and the cue card is talk about a polite person. You know who this person is. How do you know this person? What makes this person a polite person, or why you think he is a polite person? So before we start the discussion of today's cue card, I request you to please subscribe my channel and help me to grow more. Along with my YouTube channel, you can also download Ielts coaching application, and the link of my application you can definitely find in the description of this video. Guys, as you know that in my videos I always share the idea behind the cue card before I actually share the sample answer, and the idea is always in the regional language Hindi and followed by the sample answer in English language. One thing that you always notice and you request that to stand aside, but this is something intentional because I want to hide few words so that you listen to me. Many students are simply in the habit of taking the screenshot and read, but it's very important to understand the intonation, the pronunciation, the flow of the information, and that you can get only if you listen to me, not simply by reading the text. तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज के क्यू कार्ड का आइडिया। पोलाइट पर्सन बहुत मुश्किल है आजकल। पोलाइट पर्सन ढूंढना, बहुत ज्यादा रूड हो चुके हैं लोग, बहुत ज्यादा अब्रप्ट हो चुके हैं, बात बात पर लड़ने के लिए तैयार है, अग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। नो मैटर यंगस्टर या चिल्ड्रन इन फैक्ट, और बड़े मैच्योर तो जो स्ट्रेस्ड हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो बाय बर्थ या आई वुड से हैव दिस वर्च्यू मतलब बहुत एक अच्छा गुण होना किसी की पर्सनालिटी का। वाइस इसका उलट है। आपकी पर्सनालिटी में कोई अगर इवल प्रवृत्ति है, दैट इज वाइस, VICE, virtue, VIRTU is a good quality and attribute of your personality. तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं अपने किसी नोन की, और आई वुड कंसिडर कि यहाँ पर आप चाहें तो अपने फादर की बात कर सकते हैं, अपने नेबर की बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ अपने टीचर की। आप सभी बात कर सकते हैं, नो मैटर एकेडमिक या GD स्टूडेंट, आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि आपका टीचर जो था बहुत पोलाइट था। लेकिन इससे पहले आई वुड लाइक यू टू शेयर इन द कमेंट सेक्शन द नेम ऑफ द पर्सन who you actually think is very polite. I want you to find someone out of the public figures. Public figure इसलिए क्योंकि हम सबको पता होगा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे आप कह रहे हैं मिस्टर रणधीर सिंह, तो मुझे नहीं पता है कि वो कौन है, लेकिन if you say something like सचिन तेंदुलकर, जो मुझे लगता है या जिसको मैंने आज तक का सबसे पोलाइट पर्सन पाया है, तो आप भी ऐसा कोई नेम शेयर कीजिए मेरे साथ जो आपको लगता है कि एक पब्लिक फिगर है लेकिन बहुत पोलाइट है, बहुत पोलाइट है। इवन द मेलोडियस वॉइस लता मंगेशकर, वो भी बहुत पोलाइट है। सो समथिंग लाइक दैट यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन विद मी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द आइडिया बिहाइंड कि आपका जो टीचर है वो बहुत ही पोलाइट है। उसका पोलाइट नेचर उसको बहुत फ्रेंडली बना देता है। हम कहेंगे कि he used to be my maths teacher. मैथमेटिक्स आप सबको पता है बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट रहता है, एंड मोस्टली जो मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। डंडा उनके हाथ में ही रहता है, उनको पता है सब्जेक्ट इतना मुश्किल है, होता किसी से कुछ है नहीं है, ज्यादातर स्टूडेंट्स के आंसर गलत होते हैं या डर के मारे काम नहीं करते, सो 24 घंटे वो डंडा अपने पास रखते हैं। लेकिन ये जो टीचर था इसकी पर्सनालिटी बिल्कुल हटके थी, बिल्कुल डिफरेंट थी, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू टीच इन अ वेरी पोलाइट एंड अ फ्रेंडली मैनर। यही वजह थी बहुत सारे स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स से पहले डरते थे, इनके टीचिंग मेथड की वजह से उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। देन वी वुड से दैट पोलाइटनेस while dealing indisciplined students, क्योंकि ये टीचर्स की आम हैबिट होती है, when students create indiscipline they punish them, they behave very rudely with them,
बट यहाँ पर ये जो पर्सन था उस टाइम पर भी बहुत ही पोलाइटली अपने स्टूडेंट्स के साथ डील करता था एंड पोलाइटली उनको अपने मिस्टेक्स रियलाइज करवाता था। इसी वजह से डांट ना पड़ने के बावजूद बच्चों को अपनी गलती महसूस होती थी, द वे ही यूज्ड टू मेक देम रियलाइज। अब एक चीज आपने नोटिस की है, बहुत सारे लोग पब्लिकली या सोशली अपने आप को पोलाइट या सॉफ्ट स्पोकन रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन प्रिटेंड करते हैं, लेकिन जब घर पे पहुंच जाते हैं तो आवाजें बिल्कुल ही बदल जाती हैं। ये पता ही नहीं चलता कि ये वही इंसान था जो थोड़ी देर पहले सोशली इतना पोलाइटली बातें कर रहा था। तो हम ये कहेंगे, ड्यूरिंग दिस टाइम I also had an opportunity to take extra classes from this teacher. अर्ली मॉर्निंग या आफ्टर स्कूल में इनके घर एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के लिए जाता था एंड एट दैट टाइम मैंने ये नोटिस किया, जस्ट लाइक आउटसाइड ही इज इक्वली पोलाइट एट होम। मतलब घर में भी ये दूसरों के साथ वैसे ही पोलाइटली बात करता है। सो ये सारी चीजें हमारे इस क्यू कार्ड की डेवलपमेंट का पार्ट रहेंगी एंड दिस इज हाउ वी विल जस्टिफाई दैट ही इज एन एक्सट्रीमली सॉफ्ट स्पोकन पर्सन। स्माइल उनके फेस पे हमेशा रहती थी। अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स बाकी टीचर भी उनको पसंद करते थे एंड आप भी चाहते हैं कि आप भी उनके तरह पोलाइट पर्सन बने। एंड दिस इज व्हाट आई बी गोइंग टू शेयर इन द सैंपल आंसर ऑफ दिस क्यू कार्ड। नाउ लेट मी क्विकली टेल यू दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर द sample answer of all the latest cue cards in written format along with the follow-ups and introductory questions, you can buy my book Speaking Booster that contains everything। और उसे buy कैसे करना है आइए देखते हैं। You can find the sample answers to all the questions in Speaking Booster. IELTS Speaking Booster, a book written by Ramandeep sir, is available on IELTS coaching application. Download IELTS coaching application if you are an Android user. And if you're an iOS user, download ClassPlus and then enter ORG code IELTS. Make sure you register as a student, not as a parent, and click on Store at the bottom. Now you will see Speaking Booster and all that you need to do is make the payment to unlock the book. It's an electronic version that would give you access 24/7. Even if you're not in India, you can easily buy this book, make the payment in Indian rupees, it would be automatically converted in your currency. The beauty of this book is that it gets updated automatically so that you don't have to buy any speaking book again and again. Being polite is one of the greatest virtues. Unfortunately, not many possess it. Most people these days are abrupt and rude, but I feel lucky to know an extremely soft spoken person, Mr. Singh, my maths teacher. I have observed his politeness throughout my school time. He was our mathematics teacher. As you know, usually maths teachers are very strict by their nature, but Mr. Singh had a very calm and friendly nature. Where most students find maths a very difficult subject and avoid it, but because of the polite and soft nature of Mr. Singh, students developed interest in learning mathematics, as he never used to get angry or punish students for not completing their work, rather teach them in a more practical and easier way. In fact, he was not even harsh with students who used to create indiscipline. Mr. Singh always used to make them realize their mistakes very politely. For his polite nature, he was respected by students as well as teachers, and everyone used to enjoy his company. I vividly remember when I was taking extra math classes near exams at his home, I observed he was equally polite with his family as others. In contrast, most people behave differently and tend to be polite in front of society. The best aspect of his personality is that Mr. Singh always wears a smile on his face, and I wish I too become a polite person like him. And that's it. This is a sample answer of this cue card, and I hope you comfortably followed it. And now in the comment section, please tell me which other cue card you want me to prepare for you. And shortly, I will come up with a video to share the sample answer of that cue card as well. Thanks for joining for today's video. Take care of yourself. Bye-bye for now.